open to all. Museums भी हैं. ये है historical. Nearby, visit Taman Sari. Hello viewers, welcome back to Desi Family Reaction. तो व्यूअर कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि पहले से होंगे और हमारी वीडियो को मजे से देख रहे होंगे। मैं हूं तौसीफ अलवी, मैं हूं अदनान अलवी। तो हाजिर हैं एक नई वीडियो रिएक्शन के लिए, वो भी आपकी खिदमत में। हाँ जी, आज की हमारी वीडियो है ऐसा इंडोनेशियन वीडियो, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, इसलिए आपने ऐसे कर नहीं, वाकई यार लग रही है सर्दी। नाइट का टाइम है, इधर रात के बज रहे हैं कोई ना 10-11 बज रहे हैं, तो काफी ज्यादा सर्दी है। तो हम इधर बैठ के आपके लिए रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। वीडियो का टाइटल है वो भी हम आपको बता दें, योगायाkarta वोकेशनल ट्रैवल गाइड एक्सपीडा, ये टाइटल है, मतलब ये चैनल का नाम है। हाँ जी, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही बात, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई हाँ जी, इंडोनेशियन दुनिया जितने मुसलमान हैं सबको हम दोनों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और एक्सपीडिया ये चैनल का नाम है, इसका नीचे लिखेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाएं और इनका भी चैनल आदमी सब्सक्राइब करें। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। योगायाkarta, Indonesia. The Indonesian city of Yogyakarta rests on central Java, between the cool breezes of the Indian Ocean and the steamy breath of volcanoes. It's a scenic train ride from Jakarta or a short flight from Bali or Singapore. Wonderful. Singapore or Bali. Beautiful, yeah. The home of sultans, artists, and the devout since the 8th century. Yogyakarta is the gentle epicenter of classical Javanese culture and education. Step from the main station into the bustling flow of Jalan Malioboro, and you could be in just about any Javanese city. This is where Jogja, as the city is known, comes to wander, shop and snack. But refinement is just a becak ride away. Wow, yeah. Cruise down Jalan Malioboro to the very soul of the city, the Kraton. Since 1785, this city within a city has been the home of sultans and the keeping place of Yogyakarta's incredible cultural, intellectual and spiritual traditions. Wow, yeah. While the inner palace serves as the royal family's private home, the ceremonial courtyards, pavilions and museums are open to all. Museums भी हैं। Historical. Nearby, visit Taman Sari, the water palace where sultans of old and their chosen few could escape the demands of duty and the Javanese sun. Water palace, wow, beautiful. Yogyakarta's courtly center sets the tone of Javanese culture, and from here the island's arts flow forth in all their purest forms. In the gamelan's percussive magic, which drifts across the Kraton's walls to far-off kampongs, inspiring the maestros of tomorrow. In the ageless shadows of the wayang kulit puppets, who pass 1,000-year-old stories of good and evil across the ages. In the fine strands of silver which have been woven into delicate artworks for centuries. In a cuisine that leans towards sweetness rather than fire. And in the molten beeswax making its rhythmic marks across the finest batiks. While Jogja is a place of tradition, it's also a place of ever-evolving culture. Just a few steps from the Kraton, walk the lanes of Kampong Cyber,
where the community has combined Wow. street art with Beautiful, online expression amazing. to forge new creative possibilities. ये देख सब उन्होंने अच्छी पेंटिंग थी। A short Becak ride away is the Afandi Museum, the former home, gallery and resting place of the maverick artist who loosened the binds of tradition and created a seismic shift in Indonesian painting. ये म्यूजियम है। Jogja has long been the epicenter of political and ideological shifts as well. Just across from the presidential palace, pass through the gates of Fort Vredeburg to hear the stories of resistance and sacrifice that led to the creation of the Indonesian Republic. ये इनकी हिस्ट्री के लिए इंटरनेशनल Just 10 miles to the northeast of Jogja, venture back to the 8th and 9th centuries, to a time when Buddhism and Hinduism vied for the kingdom's hearts and minds. हिंदुइज्म के मतलब ये है इनके मंदिर वगैरह 8-9 सेंचुरी Prambanan is the heart of a Hindu temple network that stretches for miles. Pay your respects at the towering temples of Shiva, Vishnu and Brahma. अच्छा Then व्यू दे follow रहे the हैं। bas-relief panels in a clockwise direction to see epic Hindu tales unfold from within the stone. सब के सब पुराने Just a half-hour stroll from the main complex is Ratu Boko, ये बहुत where अच्छा व्यू आ palatial रहा है इधर remains frame the same views to Mount Merapi, ये रेस्टोरेंट once enjoyed by the visiting princes who rested here after long days of devotion. Yogyakarta sits at the doorstep of incredible Buddhist monasteries and temples too. While many stand shoulder to shoulder with the Hindu temples of the Prambanan plain, the greatest of them all, Borobudur, lies 20 miles to the northwest. ये कोई Borobudur is the world's कितने ज़्यादा हैं largest उधर? Buddhist temple and one of the most visited sites on all of Indonesia's 13,000 islands. Come early for a sunrise you'll never forget, as hundreds of stone Buddhas bless the new day's light, just as they have for over a millennia. Yogyakarta is more than just a city, it's a kingdom. Yeah, it's a kingdom. वाह यार कमाल के व्यू Beautiful. Climb aboard a doka and ride through the immaculate farmlands and kampongs of the rural heartlands, कितना अच्छा है। where life's necessities and pleasures are still handmade Wow. and made with heart. पापड़। Meet the Snacks. people who live calmly and creatively within the shadow of Mount Merapi, an active volcano अपने whose घर में moons उन्होंने have been अपने known आप to ही ना topple ये temples sunset and बनाई bury है। villages with ash. In our unsteady, rapidly changing world, deep cultural roots anchor us to all that is important. Culture teaches us to embrace and to appreciate the meaning in all life's moments, from the richest to the ordinary. Ordinary food. Wonderful. If that's the kind of journey you're looking for, take a ride through Yogyakarta, a cultural kingdom that steadies the spirit and inspires Wonderful. the soul. Clean or spike? दोनों का Wow. साथ साथ Clean or spike? वाह यार Expedia. यार wonderful. इन्होंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। कमाल बहुत की यार वंडरफुल इतनी अच्छी वीडियो हमने कहीं नहीं देखी यार। सही ये भी बात। शहर बहुत अच्छा था, कमाल का था। योगी कार्ता। बहुत अच्छा यार शहर है, कमाल का। उन्होंने बहुत से पुराने पुराने व्यूज भी दिखाए उन्होंने, तो कल्चर भी उन्होंने दिखाया, वो पेंटिंग्स भी दिखाई। बहुत अच्छे यार हमने ये वीडियो देखी, कमाल की थी। तो वीडियो बहुत अच्छी है, नाइस थी, हमने फुल एंजॉय की। योगयाकर्ता शहर भी बहुत अच्छा है, कमाल का है। तो चलते हैं अदनान के पास क्वेश्चन, ये शहर कैसा लगा? है इंडोनेशिया का ये सिटी था, बहुत ही अच्छा था।
और हिस्टोरिकल लिहाज से फेमस है और काफ़ी ज़्यादा मंदिर उन्होंने बताए हैं, दिखाए हैं इस वीडियो में, आपने भी देखे हैं। तो उसके अलावा नेचर ब्यूटी के लिहाज से भी ये शहर काफ़ी खूबसूरत है, कुदरती मनाज़र वगैरह उन्होंने दिखाए और अच्छे अच्छे भी उन्होंने कैप्चर करके इस वीडियो में दिखाए हैं। और ये एक्सपीडिया बहुत अच्छा मतलब चैनल है और अच्छी अच्छी इन्होंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो भी बहुत अच्छी थी, हमें तो बहुत ही मजा आया। ये योग्यकार्ता को विजिट किया हमने, पहली दफ़ा ये देखा है ना जी, बहुत अच्छा है यार, पहली दफ़ा इसको विजिट किया और सही बात है यार, हैरान रह गए इसको देख के, अच्छा ही था। और इसमें रोड वगैरह उन्होंने सब कुछ सही गाइड किया सिटी के रिलेटेड। तो हमें तो बहुत ही मजा आया ये वीडियो देख के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो भी लाजमी कमेंट में बता दें। आप हमें यह बता सकते नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन वाली आपके लिए कौन सी लाएं। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंतजार करें नई हमारा नेक्स्ट वीडियो तक। उम्मीद है कि हम जल्द वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।